D'accord, ça va. On va commencer cette leçon, s'appelle La ville se réveille. The city is awaking. Oui, oui, monsieur, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Revendication. Revendication, oui. Revendication means claim karna, to claim something. Suppose if something happened, a crime happened, then someone comes and say claim करता है इस तरह उसका फ्रेंच में कहते हैं revendication यानी to confess करना किसी claim को या उसका यानी उसका जिम्मेदार अपने आप को बनाना. Le commissaire means the police station जो भी आपका कमिश्नर या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसको कहते हैं. चलें यहाँ से पढ़ें. I'm going to be here Severn, okay, and you are the commissioner, you are the policeman. Start, please. Okay. Severn, je m'en vais. Si le directeur régional appelle, dis-lui que je suis à la... Dites-lui que je suis à la préfecture. Tenez, je vous laisse ces fiches. Voilà. Qu'est-ce que je... Ah bien. Vous les entrez dans l'ordinateur. Ok, d'accord. So, on peut faire comme ça, Severn, je m'en vais. Je m'en vais, I'm going away. Je m'en vais, I'm going away. Si le directeur général appelle, if the director general calls, ठीक है, let me make cursor more visible. ठीक है. Dites-lui, ask him, tell him que that je suis à la préfecture, that I am at the police station, headquarter, police station, वगैरह. Tenez, hold. Je vous laisse ces fiches. I'm giving you these files. I am letting you to these files. ठीक है? Then the Severn says, qu'est-ce que j'en fais? What should I do of this? What do I do with it? Carry on. Eh bien, vous les entrez dans l'ordinateur. Eh bien, vous les entrez dans l'ordinateur. Oh well, you enter them. You enter them in the computer. यानी registration करें computer में. Ok, monsieur le commissaire, je peux vous dire un mot. Oui, mais dites-le vite, je suis pressé. ठीक है. Monsieur le commissaire, je peux vous dire un mot. इसका मतलब है Mr. Commissioner, can I say some word? Can I say a word? ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में होता है ना कि do you have a minute? Can I say some word? तो ये उस तरह है. Je peux vous dire un mot. Then इसने कहा oui, mais dites-le vite, je suis pressé. Yes, but tell it fast. I am in a rush, in a hurry. Écoutez, commissaire, je travaille dans votre service depuis 6 mois et depuis 6 mois, vous ne m'avez pas donné un seul travail. Intéressant. Les enquêtes se sont... Oui, on va commencer de Séverne. Est-ce que vous êtes avec moi, Monsieur Iqbal? Oui, oui. OK. Écoutez, commissaire, listen, commissioner, je travaille dans votre service depuis 6 mois. I have been working in your service, under your service since 6 months. Et depuis 6 mois and since 6 months. Vous ne m'avez pas donné un seul travail intéressant. You did not give me a single interesting work. Les enquêtes, the inquiries, ce sont... attends, s'il vous plaît. Ah oui, ce sont les autres qui les font. The inquiries, these are the others. These are the others who do them. Quand il y a une urgence, when there is urgency, there is emergency, ce sont les autres qui vont. These are the others who go there. Et comme par hasard, and like by chance,
Les autres, ce sont toujours les hommes. And others are always the men. Je n'ai assez. Je n'ai pas fait l'école de police pour être secrétaire. I have enough of it. I did not do the police school just to be a secretary. Does it make sense to you? Yes. Okay. Can you read further, please? Dites-moi, c'est un révolte, ça? Prenez-le comme vous voulez. This was actually, Commissioner says, tell me, this is revolt, यानी बागी होना किसी चीज से, तो उसने कहा पढ़ने-लो comme vous voulez. Take like you want, yeah, what do you want? Acha, can you read this, please? Bon, vous voulez une enquête? Vous allez en avoir une. Occupez-vous de cette affaire de vandalisme au musée. Le dossier est sur mon bureau. Lisez-le. On en parle à mon retour. Very nice. Okay. Then he said, bon, vous voulez une enquête? Good. Do you want to inquiry? तो इसने कहा vous allez en avoir une. You're going to have one of it. vous allez avoir une भी हो सकता था, इसका मतलब you're going to have one. But on यहाँ पर इन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया one of them. ठीक है. Vous allez en avoir une. Occupez-vous de cette affaire du vandalisme au musée. Be busy, go busy with this affair, the vandalism affair which was done in the museum. Le dossier est sur mon bureau. The file is on my office. यहाँ पर mon bureau, basically bureau has two meaning. Office भी होता है और desk भी होता है. टेबल को भी कहते हैं. ठीक है. लीजे लो, उसको पढ़िए. ठीक है. On en parle à mon retour. We talk about it while I return. ठीक है. Supposition पे आ जाए. Supposition quelques heures plus tard. Can you start reading, please? Alors, inspecteur, d'après vous, qui a fait les coups? Vous avez une idée? Okay. Alors, inspecteur, d'après vous. Hello, inspector. Then inspector. Actually, hello, Tony. Then inspector. About after any according to you. D'après vous, according to you. आपके मुताबिक qui a fait le coup? Who did this hit? Who did this act? Vous avez une idée? Do you have an idea? Pas encore. Not yet. Tout est possible. Everything is possible. Ça peut être un jaloux qui se venge du directeur du musée. This can be a jealous who wanted to revenge the director of the museum. Des jeunes qui s'amusent au-dessus de la politique du maire. Or they can be young who amuse, who get fun, are disappointed of the politically disappointing for the mayor. यानी ये कोई एक जेलिस आदमी हो सकता है जो कि डायरेक्टर के म्यूजियम से यानी जेलिस है, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को मेयर की वजह से जो है इंजॉय करते हैं. आगे पढ़िए प्लीज. Vous croyez que la position peut organiser ça? Vous croyez que la position a pu organiser ça? What do you think? What does it mean? It means that you believe that the opposition may be organizing that. यानी could have organized this, यानी आपको यकीन है या आप ये ख्याल करते हैं कि अपोजिशन ये कर सकती है. ठीक है. आप भी यानी could organiser ça, ये organize कर सकती है. Pas vraiment, not really. Il leur manque le sens de l'humeur. They are actually missing the sense of humor. ठीक है. Non, je vois plutôt une sorte de provocateur. But me, he said me, I am looking rather more a sort of provocateur. यानी मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो भड़काने वाला होता है, प्रोवोकेट करने वाला होता है. ठीक है. Un de ces idéalistes qu'on trouve dans les milieux artistiques. One of these artists
who find in the best artistic. ठीक है, यानी ऐसे उनमें से ऐसे आर्टिस्ट जो उसने बहुत सारे बेहतरीन आर्टिस्टों में से मुंतखब किए बेसिकली. ठीक है. So this lesson was about dialogue in which we used some pronoun, direct, on, etc. Ok, merci.